So yesterday we developed this block diagram model of two area load frequency control. Two area means this is one area. One area means one coherent group of the generators, which can be made equivalent to the one generator. So this TPS is the equivalent time constant of the generator. TT1 is the equivalent time constant of the turbines in the area 1. TH is the speed governor. R1 regulation equivalent, which is equal to the 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. And this is the equivalent regulation of area 1. And this is the area 2. Similar to this one, similar to the side 1, generator, here it is generator 1, here it is generator 2, equivalent generator 2, equivalent turbine T2, equivalent speed governor, and regulation. And yesterday we also derived that if the two areas are connected to the grid, and this area 1 frequency is F1, area 2 frequency is F2, then F1 minus F2 multiplied by 2 pi T1 to S is equal to this X2 tie line power. This is the tie line power X7. So X7 divided by this is equal to this. This equation we derived yesterday. And this tie line power, further, this is the tie line power. This tie line power net the change in tie line power, change in demand, and change in this speed changer setting according to the primary automatic load frequency control loop. This opening, because of this X2 minus means this PG minus PD minus tie line power. According to that, the net change in the frequency will take place. So this is about area 1. This is about the area 2. Similar to this side, there is another side. So is there any query up to this diagram? This diagram was derived yesterday and described also. Now we will analyze this diagram, and we know that for analyzing previously also, in the previous classes also, we analyzed with the help of the transfer function, we analyze what happens about the frequency. If it is a say frequency F1, and what will be the about frequency when there is a change in demand. The only difference is here the frequency, this change in frequency will not only depend upon the demand, but it will also depend upon the tie line power, because this tie line power is coming the power from the another area. So the demand minus means आपकी demand 100 से suppose 110 हो गया, and power going to the another area, it again become say 50 to 60. So the net difference is the 20 megawatt. 10 megawatt increase in demand, 10 megawatt increase in the tie line power, which is going to the another area. So according to the 20 megawatt, the frequency will take place. Okay, suppose it is a 10 megawatt, and this is taking the 10 megawatt. It is taking 10 megawatt. It is giving 10 megawatt. So then there is no difference. 10 minus 10 will be 0. There will be no change in the frequency. So change in frequency of area 1 will be affected by the net change here. Net change in demand plus tie line power. Similar to on this area, here also. Frequency of area 2, here frequency of area 2 will not only depend upon this demand 2, but also depend what is the tie line power, which is being shared to the area 1. And according to this, these are the two block diagrams. Now we know how to get the performance analysis, steady state, or dynamic analysis. For this, earlier, in case of a single area, we used to take the Laplace transform. We used to take the transfer function. Say if it is x1, we want to find out x1 by pt1, then x1 by pt1 was nothing but it is a gs and the whole is hs. So gs of the 1 plus gs hs. According to that, we obtain the transfer function x2 minus del pt1. ये हम निकाल देते हैं. x1 means change in frequency. Change in frequency divided by del pt1 is equal to this gs of the 1 plus gs, and this whole is the hs. Multiplication of this is hs. And but here it is not about the f1 and pt1. This f1 also
depend upon this factor F2 also. So here there are two output. In the previous case, there was one output. Here there are two output. So when there are multiple outputs and multiple inputs, if there are the multiple inputs, then the performance analysis cannot be done with the help of simple getting the transfer function. So for that, we do, if the system is big enough, we cannot perform the transfer function analysis, then we have to perform the state space model. We have to drive the state space model, then we can obtain the transient or steady state response both. Now to obtain the state space model of this, what we will do, we will write the linear differential equation for this whole system. This is the whole system. So for this we will write the linear differential equation. How we will write? Say if it is this is F1, here it is a del F1 means change in frequency. Here it was del Pg, change in the power coming from the turbine. This is YE means opening of the speed governor. It is the speed governor. With the help of speed governor, how much fuel is opened. So it is the del YE fuel opened. And here it is the X. This is F1 minus F2. F1 minus F2 multiplied by this is the tie line power. So this tie line power here also. So according to this tie line power, and this is the opening. So by X3 divided by this is equal to here. So we can write the difference equations. One equation can be written as x1 divided by this. X1 divided by this is equal to this. Means you should do this side by side. You should keep your notebook with you, and you should apply your mind to solve this side by side, because this x1 divided by this here, this is x2 minus this is it is x7. So x2 minus x7 minus del PD1. Del PD1 you can consider it as W. You can say it is disturbance or change in the demand power. So let us have it as we will call it as a W1. So this x1 divided by here, and what is this? X2 minus 7 minus W. So x1 divided by x2 minus 7 minus W is equal to this. So you can say here, what we can say? X7 minus, X2 minus X7 minus W1 multiplied by this 1 plus S TPS1 is equal to X1 and X1 into KPS1. So if you do multiply with this, or you can say this output y input is equal to this. Output, this is x1 divided by here will be this. So x1 multiplied by this is equal to kps1 multiplied by this. So if you write this equation here, you see, if you write this equation here, this kps1 multiplied by this x2 minus x7 minus w, देखिए यहाँ पे देखिए, this is x1 multiplied by this, and x2 minus x7 minus w1 multiplied is equal to multiplied by kps1. x2 minus x7 minus w1 kps is equal to this, and x1 into this, where s is nothing but derivative dy dt. So s tps1, s means s tps1 and tps1 x into this x1, so it will be x1 dot, and when you multiply 1 into x1 will be this. So is this equation clear? ये इक्वेशन क्लियर है कि नहीं है? दिस इज वेरी इंपोर्टेंट इक्वेशन. ये आपको क्लियर हो गई इक्वेशन या नहीं? यस. हाँ सर रिपीट कर दो सर एक बार. देखिए, अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठा तो 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा. आप ये लिखेंगे x1 डिवाइडेड बाई दिस, x1 डिवाइड बाई दिस, ये क्या है? x7 माइनस x2 माइनस x7 माइनस w, यहाँ पे आ गया. तो x1 डिवाइड बाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू kps1 बाई tps1. ओके, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा. तो ये जब इधर जाएगा तो x1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. तो x1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और kps1 में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट?
कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो 1 मिनट में आ जाएगा, केवल ऐसी सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको बार बार कंफ्यूजन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं जगबीर, मिस्टर जगबीर? इज इट क्लियर और नॉट? कार्तिके, यस आर सर। यू लिसनिंग मी? हाँ, ये इक्वेशन क्लियर हुई या नहीं? हो गई सर। ओके, थैंक यू। Now we write the second equation x2 divided by x3. ये x2 है, ये x3 है। x2 क्या था? डेल Pg1 जनरेटर 1 का पावर में चेंज, और ये क्या था? ओपनिंग कितना है? ओपनिंग ऑफ द फ्यूल बाई E. सो x2 by x3 is equal to this. तो x2 by x3 is equal to this. तो x2 multiplied by this is equal to x3, this x3. So x2 multiplied by this can be here. This equation will be like this. Okay. x2 multiplied by s tt1 into x1 divided into is equal to x3. This is the equation. Okay. So this equation and this equation can be written as x2 dot is equal to this. This x2 will come on this side. So minus x2 and divided by tt1. So tt1 divided. Is this equation clear or not? Yes, sir. Okay. Now here the x3 divided by this, x3 divided by this is equal to this. Okay. So इसका मतलब x3 multiplied by this is equal to 1 multiplied by this. So x3 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे x3 और x3 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 डॉट THG1 मीन्स x3 प्लस x3 डॉट THG1 इज इक्वल टू दिस। एंड व्हाट इज दिस? यहाँ पे कितना है? इट इज x7 माइनस दिस। x7 माइनस ये कितना है? ये x1 इंटू x1 1 बाई r1, x1 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई r1। तो इसका मतलब क्या होगा? x7 माइनस x1 बाई r1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 1 है ना, इज इक्वल टू x3 प्लस x3 डॉट THG1। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो इज दिस इक्वेशन क्लियर और नॉट? ये देखिए यहाँ लिखा होगा थर्ड वन, दिस इज द थर्ड वन। और पेन लेके बैठा तुरंत हो जाएगा ये। इज दिस क्लियर और नॉट? दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्लियर हुई? दीक्षा, इज दिस इक्वेशन क्लियर? दीक्षा, दीपिका? Yes, sir. ओके। नाउ द अनदर इक्वेशन। तो इसी को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, देखिए ये लिख लिया। मींस वन इक्वेशन विल कम फ्रॉम दिस डिवाइड बाय दिस, another equation will come this divided by this, another equation will come this divided by this, and 1 2 3 equation. Then similar to this we can write the fourth equation. This divided by this is the fourth equation, then this divided by this is the fifth equation, this divided by this is the sixth equation. So 1 2 3 4 5 6 equation will be written, and these 6 equation are written here as it is. x1, ये x1 dot, ये x2 dot, then from here x3 dot, then x4 x5, x4 dot, x4 x5 x6. These are the 6 equations. Okay, so ये equation आ गई। now ये हमारी 6th equation आ गई। 1 2 3 4 5 6 7th equation now. You see 7th one. And what about the 7th? 7th equation कहाँ से लिखेंगे? ये रहा, इस ये x1 माइनस x4, ये x1 है ये x4 है, मीन्स f1 f2 है, डेल f1 माइनस डेल f2 इज इक्वल टू, और यू कैन से x1 माइनस x4. So this is x7. x7 divided by this, x7 divided by x1 minus x4 is equal to this.
Okay. So x1 minus x4, this is input, this is output. X7 divided by this is equal to here. So bringing this s on the numerator side, so this x7, it is x7, or you can say this x7 multiplied by this is equal to 2 pi t12 multiplied by x1 minus x4. इस इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा है, x7 की इक्वेशन लिखा है, x7 is this, x7 dot, because s का मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया. So these are the 7 equation. If you write, इसमें किसी को कोई भी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम हो, you can ask, otherwise आगे आपको फिर पता नहीं लगेगा क्या है. If you write all those 7 equation into the matrix form, ये जो 7 इक्वेशन है उन्हें अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपको इस तरह आएगा. 7 इक्वेशन मीन्स x1 dot x2 dot x3 dot x4 dot x5 x7 dot is equal to ax plus bu, x dot is equal to ax plus bu. Is all 7 equation, if you write into the matrix form, it will come like this, where x1 dot, this x1 dot is nothing but x1 dot, x2 dot, x3 dot, x4, x5, x6, x7 dot. So this is again column matrix, this is a column matrix, this is a column matrix, this is a column matrix, it is a derivative of column matrix, it is called the system matrix. So x dot is equal to ax plus bu, where a is called the system matrix, u is called the control matrix. ये इक्वेशन आएगा. इसमें किसी को भी अभी डाउट है, then he or she can ask. हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. Tanu, is it clear or not? Yes, sir. Okay. So this is x dot is equal to x plus u. Now question is how to solve it. उसमें तो आपको पता था, if it is a transfer function, then there was a command. और उस कमांड के अकॉर्डिंगली आप मैटलैब में एक कमांड लिखते थे तो उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस आता था. यहाँ एक तो आ गया x dot is equal to x plus bu. Now depending upon what output you want. अब आपको चाहिए क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 आर द सिस्टम वेरिएबल्स. x1 ये सिस्टम वेरिएबल्स हैं, वेयर x1 क्या था, डेल f1, एरिया 1 का फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एरिया 1 फ्रीक्वेंसी. x2 क्या था, चेंज इन द जनरेटर 1 पावर. x3 क्या था, ओपनिंग ऑफ जनरेटर इन एरिया 3. x4 क्या था, नाउ यू टेल व्हाट इज x4. x4 क्या है, x4 कार्तिके, कैन यू टेल व्हाट इज x4. जगबीर, यस जगबीर, आर यू नॉट लिसनिंग मी. रवि, यस सर. हाँ बताओ व्हाट इज x4. सिस्टम मैट्रिक्स में x4 क्या है. ठीक से सुन नहीं रहे हो आप लोग, इसका मतलब अगर आप सीधा रिटेन ही नहीं कर पाएंगे ये क्या है तो आगे बताऊंगा तो क्या पता लगेगा. x4 इज नथिंग बट, है पार्डन, यस दीपिका बोलो. x4 is the frequency of area 2, deviation in frequency of area 2. x5 क्या है, deviation in the PG power, generated power of area 2. Yes, sir. And x6 is the opening of fuel of area 2. And what is the x7? x7 क्या है, रोबिन ठाकुर बताओ what is x7. Yes, x7 is the tie line power flowing from area 1 to area 2. तो ये हमारा इक्वेशन आ गया x dot equal x plus bu. Where now question is what we want to output. हमें क्या चाहिए, हमने आउटपुट में अगर फ्रीक्वेंसी देखना है, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, क्या है, x1 और x4 दोनों फ्रीक्वेंसी है. x1 एरिया 1 का फ्रीक्वेंसी है, x4 एरिया 2 का फ्रीक्वेंसी है. तो हम ऐसे लिखेंगे y is equal to cx, y is equal to cx plus bu.
So like this, y is equal to cx means ये 7 है, y is equal to cx. So if you multiply this row into this column, what it will come? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x1 आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ऑल टर्म आर जी, सब जीरो है, जीरो का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? x7 मीन्स cx, c is this और x is this, size of x is ये क्या है? 7/1 और what is this? 2/7, 2/7 और 7/1 तो क्या हो जाएगा? 2/1. इसका जो मैट्रिक्स आएगा 2/1, वेयर फर्स्ट विल बी दी दिस इनटू x1, तो एक x1 आ जाएगा, और दूसरा में यू मल्टीप्लाई दिस रो इनटू दिस कॉलम, तो ये क्या आएगा? फोर्थ, देखिए 1 2 3 आर 0, 1 2 3 विल बी 0 एंड फोर्थ x4 आ जाएगा. मतलब y इक्वल टू जब c इंटू x करेंगे तो उसमें कॉलम मैट्रिक्स आएगा 2/1 का, या 2/1 में फर्स्ट वैल्यू cx, फर्स्ट वैल्यू क्या है? दिस x1 एंड x2, x1 एंड x2 आ जाएगा. सो देन in the output, y in the output is the x1 and x4, means x1 means frequency of area 1 and frequency of area 2. आउटपुट में दो चीज आएंगी, frequency of area 1 and frequency of area 2, that can be plotted. तो अब ये कैसे लिखते हैं? how to write the whole matrix including the system matrix? You know x dot is equal to x plus bu plus fw, although it can be given, but if you are in the field you have to develop this system matrix. Now अब इसको सॉल्व करने के लिए सपोज x डॉट इज इक्वल टू x प्लस बी है, y इज इक्वल टू cx प्लस dw है, और y इज इक्वल टू cx प्लस du कहते हैं इन प्लेस ऑफ u, इनपुट वी कॉल इट एज ए डिस्टरबेंस, तो w. सो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? x डॉट इज इक्वल टू x प्लस bu, y इज इक्वल टू cx प्लस du. तो इसको सॉल्व करने के लिए ये देखिए मैटलैब प्रोग्राम, ये आपको वैसे ही करना है जैसा कि आपने पिछले सेमेस्टर में किया हुआ है. सबसे पहले क्या है? वैल्यू, व्हाट इज TS1, व्हाट इज TSG2, व्हाट इज TT1, व्हाट इज TT2, सभी की वैल्यू रखना, सभी स्पीड गवर्नर और सभी टरबाइन, सभी पावर सिस्टम, सभी गेन्स, सभी का गेन. तो A12 अगर 1 मींस द रेटिंग ऑफ द टू मशीन आर सेम, बिकॉज T12 A12 is nothing but T12 divided by T21, and that is nothing but their rating PR1 by PR2. So if the rating are same, then A12 will be 1. So it means we will give all these values. Then we write the program of this. देखिए x dot is equal to a में क्या था? ये सिस्टम मैट्रिक्स है, ये 1 ब्रैकेट एंड इट क्लोजेस समवेयर, तो नथिंग स्पेशल, इट क्लोजेस हियर. ये सिस्टम मैट्रिक्स हो गया जिसे हम, सिस्टम मैट्रिक्स हो गया जिसको हम यहाँ तक ये करना चाहते हैं सॉल्व. ए इक्वल टू सिस्टम मैट्रिक्स, तो ये उसी तरह का सेम मैट्रिक्स है, इट इज द सेम मैट्रिक्स दिस. ये जो ये आया था आपने इक्वेशन ड्राइव करके आया है, सेम सिस्टम मैट्रिक्स वी राइट हियर, आपका ये लिख दिया इसमें. तो बता दिया हमारा सिस्टम मैट्रिक्स क्या है. डिस्टर्बेंसेस W1 एंड W2, मतलब एरिया 1 का में हमने 10 मेगावाट पावर चेंज किया, एरिया 2 में सपोज 2 मेगावाट पावर, इसमें 10 कम हुआ, इसमें 2 बढ़ गया, तो नेट डिस्टर्बेंस मींस इट इज सिंबल इट W1 एंड नेक्स्ट रो W2. सो y इज इक्वल टू cx प्लस dw, तो ये W1 ये आ गया कि डिस्टर्बेंस क्या है. और ये f ऐसे था ना, x डॉट इक्वल टू ax प्लस u और ax प्लस x डॉट इक्वल टू ax प्लस fw, f, सो दिस इज ए f. एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो ये यहाँ से आ रहा है, देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस vu या fw, तो ये f है, ये f है. इस f की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी. ओके, तो ये f की वैल्यू भी लिख दी. सो f इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू fw इज f इंटू डब्ल्यू. देन c हमें निकालना क्या है? अगर दोनों फ्रीक्वेंसी निकालना तो c की वैल्यू ये हो गई d0. देन वी वांट टू प्लॉट फॉर
0 इक्वल टू t इक्वल टू 0 टू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक प्लॉट करना चाहते हैं, दिस इज द कमांड step response. If we want to find the step response means unit step change in area 1 और area 2, किसी में भी यूनिट स्टेप चेंज होगा तो ये फॉर्मूला है, स्टेप इन द मैटलैब कमांड है ये, स्टेप AFWCD1T। FW क्या है? V, ऐसा मान कंट्रोल सिस्टम में AX प्लस VU पढ़ते थे तो ये डिस्टर्बेंस और ये F, तो ये कमांड है स्टेप। when you write this command it will write the several values of y की सेवरल वैल्यू लिखेगा एट एवरी इंटरवल ऑफ 0.0 से स्टार्ट करके 0.02 सेकंड पे, 0.04 पे, 0.06 पे, अप टू 30। तो ये y के अंदर इस बहुत सारी वैल्यू आएगी, मतलब एक टू कॉलम का एक मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट कॉलम में f1 दैट इज द x1 और सेकंड कॉलम में x2 होगा। जब हम इसे प्लॉट करेंगे ये नथिंग, इट इज जस्ट when plot t into y, तो ये y को प्लॉट कर देगा, y मींस f1 f2 दोनों को प्लॉट कर देगा। एंड if you see this plot this मींस अगर हमने 1% डिमांड चेंज किया, ये लिखा होगा कितना चेंज है, w में कितना चेंज है, या w की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, w की वैल्यू यहाँ कहीं गिवन है, देखिए 0.01 एंड w2, केवल एरिया 1 में 1% लोड चेंज हुआ है, एरिया 2 में कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए ये ग्राफ आएगा। ये डायग्राम है वेयर इट शोज एरिया 1 ये डेल्टा, ये एरिया 1 का, तो एरिया 1 मींस डिमांड हमारा एरिया 1 में 1% चेंज हुआ था, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी चेंज हुई, इतनी 0.02%, नॉट 0.02, 0.02% फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ये वाली, एंड इट विल गो लाइक दिस एंड फाइनली इट विल सेटल लाइक दिस। सिमिलरली एरिया 1 में डिस्टर्बेंस हुआ है, एरिया 2 में भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बट इसके कंपैरिजन में कम है, and this is the 0.5% steady state. And dynamically you can see this is the graph. So in this way we will find the frequency f1 and f2 with the help of statistical model. We can also solve the same problem with the Simulink diagram. हमने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप से उसकी वैल्यू पुटअप की, ये आइटम ये प्लॉट कर ली, ये पुट कर लिए by putting the with the help of drag and drop this and putting the value and connecting them according to the requirement. Then if we run this program here and we will see the result, same result will come, same result, यही वाले same result आएंगे। तो या तो सिमलिंक भी करें या MATLAB फाइल के थ्रू करें, सेम रिजल्ट विल कम। सो इज देयर एनी क्वेश्चन इन दिस? अब तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? रोबिन ठाकुर, इज इट क्लियर और नॉट? दीपिका, इज इट क्लियर और नॉट? कार्तिकेय? यस सर। हाँ, देखिए मैं आपको सभी को कह रहा हूं, इसमें प्रोग्राम भी गिवन है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्राम किए हुए हैं, आपको पता लग गया मैटलैब कैसे वर्क करता है। अब साथ ही ये प्रोग्राम भी इसमें डालेंगे और ये रेस्पॉन्स प्लॉट करें, देन यू विल हैव द कॉन्फिडेंस, थ्योरी भी समझ में आएगा और ये समझ में आएगा कि हमने क्या करने से क्या होता है। तो यू विल हैव द रिलेशन बिटवीन थ्योरी एंड आउटपुट रिजल्ट्स। तो आप थ्योरी भी समझिए, ये प्रोग्राम को यूज करिए और इसको ये रिजल्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये रिजल्ट आएगा। देन यू प्रिपेयर योर लेक्चर नोट्स अकॉर्डिंगली आप उसे प्रिपेयर करिए, तो एग्जाम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्टली यू विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है? हाँ, इसमें देखिए ये आप केवल रिकॉग्नाइज करने की बात क्या है, जिस एरिया का लोड चेंज किया था,
जिस एरिया का लोड चेंज किया था उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा चेंज हुई है, जिसका दूसरी एरिया का फ्रीक्वेंसी कम इफेक्ट हुई है। ओके, तो ये 2% था, ये 0.5% है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और बट व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? Our requirement is we don't even want any change। ये जो चेंज है ना, ये 50 हर्ज है, उसमें 0.5% फ्रीक्वेंसी चेंज, ये we also don't want this। अगर आपका 0.25 फ्रीक्वेंसी मीन्स 94 सपोज करिए आपका 49.75 है, दैट आल्सो वी डोंट वांट, वी वांट द फ्रीक्वेंसी शुड कम टू 50। ऐसे ही ये हमारी 2% 49 की जगह अगेन वी वांट एज ए 50, फ्रीक्वेंसी हमारी पूरी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। एंड दिस यू नो, हमने पहले फर्स्ट सिंगल एरिया के केस में देखा था कि फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी फाइनली कैन बी, स्टेडी स्टेट एरर कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर मींस हमने स्पीड चेंजर सेटिंग पे एक इंडिकेटर लगाते हैं। इन द स्पीड चेंजर सेटिंग, ये सिमिलर मॉडल है। एनीवे वी अप्लाई द इंटीग्रेटर लाइक दिस। वी अप्लाई द इंटीग्रेटर हियर 1/s। ये देखिए 1/s इज इंटीग्रेटर हियर, इट वाज द स्पीड चेंजर सेटिंग, तो which was going to this here speed changer setting। so now this setting is changed according to the integrating of the signal। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ था उसका इंटीग्रेट सिग्नल करके 1/v1 हमने इसमें दिया हुआ था, यहाँ पे एक इंटीग्रेटर लगा दिया। मीन्स इट इज द सेम फिगर जैसे हम पहले कर रहे थे वही है, इसमें एक इंटीग्रेटर लगा दिया। और दिस इज नथिंग बट द टाइलेंट पावर इज आल्सो देयर, यहाँ एक इंटीग्रेटर लगा दिया। This integrator will do what? This will do, we know the role of the integrator is to remove the steady state error। so what we expect कि हमारा जो सिस्टम है उसमें ये जो एरर है ये मिनिमाइज होकर फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज, तो इसलिए इंटीग्रेटर लगाते हैं। नाउ हाउ वी विल डू एंड व्हाट विल बी द नेट चेंज इन इक्वेशंस? अगर हमने इंटीग्रेटर लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा? और देखिए सेम टाइप की इक्वेशंस लिखा है यहाँ, केवल एक इंटीग्रेटर लगने से एक इक्वेशन चेंज हो जाएगी, देन वी कैन सी द रिजल्ट। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? इज एनीबॉडी इंटरेस्टिंग टू आस्क एनी क्वेश्चन? If nobody is asking question, then we can close the chapter, we can close the meeting, and tomorrow we will take from here in continuation। So any question? No, sir. No, sir। देखिए दो चीजें